Hello, hi, namaskar. Welcome to Pristine IAS. So, this is your GS 1. Wait a second. 2023 GS 1 2023. This is part 2. Part 1 रे हमें question number 1, question number 2 और question number 13 ये तीन टाइम डिस्कशन करथिले. So you can watch that video. So I'm upload already कर in our YouTube channel, and the PDF is also available. ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ସେଇଟା ଅଛି. That is OPSC Achievers Academy. ଠିକ୍ ସେଠି ଗଲେ ପ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ IAS ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଥିବ. ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଖୋଜିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତାର PDF. ଆର PDF ବି ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆଫ୍ଟର ଦ ଲେକ୍ଚର. ଫାଇନ୍. So let's start. ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ. Question number 3. What is the role of actually ପଚାରିଛି ସେ INA ଯୋଉଟା ଥିଲା ଆମର. What role did the INA trials play in facilitating the process of Indian independence? Indian independence रे INA रो जो ट्रायल ହେଇଥିଲା, INA is formed by ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ. ତ ତାଙ୍କର जो इंडियन नेशनल आर्मी थिला ସେମାନଙ୍କୁ जो ट्रायल କରାଯାଇଥିଲା ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା, ତାର जो ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କି ତାର ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇପାରିଲା. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ. ଫାଇନ୍. କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1945 INA ट्रायल्स रेड फोर्ट. 3 जन ऑफिसर को नाम मन रखिबो. जने थिले हिंदू, जने सिख आ जने मुस्लिम. प्रेम कुमार सेगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान. तो जानिथिबो पढिथिबो तमे. द INA ट्रायल against the officers Prem Kumar Sehgal, Gurbakh Singh Dhillon and Shahnawaz Khan acted as a major catalyst that accelerated the final phase of India's freedom struggle. जो फाइनल स्ट्रगल चलता फ्रीडम पे ताको ये कौन कला एक्ट एज ए कैटलिस्ट आर लाइक दे सेन कौन करते गोटे जिनस को स्पीड अफ कर दियंती. जहाँ गोटे प्रोसेस चलथिबो, गोटे केमिकल प्रोसेस चलथिबो ताको से स्पीड अफ कर दियंती. दैट इज नोन एज कैटलिस्ट. तो जो भी स्ट्रगल चलता इंडिपेंडेंस को ये ताको टिके आउट की हेल्प कला कि जल्दी केमती इंडिपेंडेंस मिल पारिबो. फाइन. तो रोल को सबले मु कहि आछि, तुम रोल लिख, फंक्शन लिख, किसी भी लिख. जदि गोटे 15 मार्क क्वेश्चन तुम अटेंड करछ, मिनिमम गोटे डायग्राम बनइबो. आ जदि 20 मार्क्स करछ 1 or 2. फाइन. एमिति ले कोन होबो, इट विल जे तुम कॉपी चेक करिवो, इवैल्यूएट करिवो, इट इज इजियर फॉर देम टू चेक योर कॉपी. तांको बहुत एफर्ट लगाय पड़िबोनी. जेहेतु तांको एफर्ट लगाय पड़िबोनी, that means you are going to get some extra marks. सब बेले तमे गोटे फिगर करिवो, फिगर रे इम्पोर्टेंट हेडिंग सब हेडिंग लिखिवो. आउ पैराग्राफ रे जो जिंस लिखुचो जोडे भी तुमको जणेबार अछि, यू जस्ट हाइलाइट इट बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉक्स करो कि अंडरलाइन करो जोटा तुम जणेबाक चाहतो, यू विल डू दैट. Fine. So देखो, what is the role played by INA or the role of INA trials in facilitating Indian independence? First law, unprecedented national unity. Second law, mass upsurge and political consensus. Third law, demoralization of British armed forces. Fourth law, triggering armed mutiny. Fifth law, erosion of British hegemony. Sixth law, massive defense and mobilization. Seventh law, forced British realignment.
जदि तुम एत जिन लिखि दौच जे इवाल्युएट कर तार आंसर मिलगला फाइन। तो आम टी आपको एक्सप्लेन करवा पॉइंट नंबर 1 दैट इज अनप्रेसिडेंटेड नेशनल यूनिटी द ट्रायल ऑफ ए हिंदू a Sikh and a Muslim together fostered immense communal harmony, uniting people across religious, caste, and regional divide against British rule. प्रथम point. द्वितीय कौन थिला mass upsurge and political consensus. That is political parties across the spectrum, including the Congress, Muslim League, CPI, ठीक, set aside their political difference to campaign and release of INA prisoners. Demoralization of British armed force. The trial shattered the belief that Indian military was unconditionally loyal to the crown. Sympathy for the INA spread rapidly within the ranks of British Indian Army. British Indian तुम शुणिथ रॉयल इंडियन नेवी ठीक से म्यूटिन होता ब्रिटिश इंडियन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ट्रिगरिंग आर्म्ड म्यूटिनी. The widespread sentiment directly inspired major armed rebellion, notably कौन अच्छी Royal Indian Navy revolt in the year 1946. Erosion of British hegemony. British realized they could no longer rely on the military, the main pillar of their rule, to suppress Indian nationalism to enforce authority. सेमानकु लागिला कि सेमाने आउ आर्मी ऊपर रिलाय करिकी तांगर जो हेजिमनी थिला सेटाକୁ चलै परिबे. Massive defense and mobilization, that is prominent leaders like Nehru, Vallabhbhai Patel, Bhulabhai Desai, Tej Bahadur Sapru personally defended the officers, legally legitimizing the INA's fight for liberation. Then forced British realignment. Faced with intense public pressure and urban protest, the colonial government was forced to commute the sentence, making a humiliation for British authority. Right? तो एतिकी पॉइंट लिखियो तापर गोटे छोटो कौन लिखियो छोटो गोटे लिखियो conclusion and your answer is ready. The INA trials made it clear to the British government that their stay in India was unsustainable. ସେମାନେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଠି ରହିପାରିବେନି, directly hastening the dispatch of cabinet mission and ultimately transfer the power of 1947. देखलो এই যে জিনিসটা লিখিলা না unsustainable, এইଥିରେ ହିଁ ତମର ଆନ୍ସରଟାକୁ ସେ ସମରି କରିଦେଲା. ପଚାରିଥିଲା ନା ଏଇଠି କେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କଲା ବୋଲି. ଫାଇନ୍. ତ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି କିଛି कीवर्ड यूज କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ and that keyword can be inculcated only by practicing. ଯେତେ ତମେ PYQ analysis କରିବ, ଯେତେ ତମେ से टॉपिक रो क्वेश्चन को देखिबो, जेते तमे मॉक लिखिबो ताहले तमरो धीरे धीरे ए सब जिंस इनकलकेट हे जिवो तम भितरे. Give an outline of Swadeshi movement in Bengal between 1905 and 1908. Critically analyze its impact on freedom struggle. हम जानते स्वदेशी मूवमेंट के भेजला 1905 रो स्टार्ट हेकी 1908 पर्यंत चलला. The Swadeshi movement originated as an anti-partisan response to Lord Curzon's division of Bengal. 1905 रे जेता लॉर्ड कर्जन कोन करले बेंगल को दुटा पार्ट डिवाइड कर देले, ईस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल. तांको कहया कथा थिला कि they are dividing it due to or to facilitate the administrative region ru se mane divide kale boli कहले. but you know what is the माने हम जानते ना कौन पे सब जिन हेतला what is the cause behind the division. Evolving from moderate petitioning into a radical mass movement for Swaraj. Fine. Outline करिया से कहिची. Fine. Outline the okay outline of the Swadeshi movement. तो कौन कौन है आउटलाइन में आसियो. फर्स्ट ला बॉयकॉट एंड स्वदेशी. सेकंड ला इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मशक्ति. राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड समिति. कल्चरल रिनेसा एंड नेशनल एजुकेशन. ये सब जिनस जेतरा प्रिलिम्स पढ़ी ऑलमोस्ट आम आपको कवर कर. मेन्स ये सब जिन फेर पढ़ा दरकार ना. बट जिनस है कि तुम मेन्स यही क्वेश्चन पढ़ले भी तुम एतिक पॉइंट लिखिपर तो जदि न लिखिपर आउ थे पढ़ कि पढ़ले भी किसी फायदा हेनी. एग्जाम जो तुम मिल 8 मिनिट 10 मिनिट मिल से सब पॉइंट कर. तो
हार्डली तुम 2टा कि 3टा पॉइंट मन पड़ो बाकी एत जेनेरिक लिखी आसो मार्क देवा भी चाहिए फाइन टिके प्रैक्टिस करने चेष्टा कर वेदर यू हैव जॉइंड द मॉक टेस्ट जदि मॉक टेस्ट जॉइन करना कोठी जदि करियर अच्छी यू कैन जॉइन स्टिल टाइम इज देयर जे न करिया चाहो जदि निजे करिया चाहो आल्सो यू कैन डू इट बट ट्राई टू राइट आंसर्स आज डेट रु मिनिमम गोटे 3 ରୁ 5ଟା तुम आंसर लिख मिनिमम मुझे कहूँ जे तुम कौटी जॉइन कर देन वेल एंड गुड जमी चलती सेमती चलू जे तुम जॉइन करूना कौन भी कारण तुम देन ऑल्सो यू राइट मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चंस फाइन तो प्रथम जिन कौन बॉयकॉट एंड स्वदेशी पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस टेक्सटाइल्स सोप्स मैच बॉक्स नेशनल एजुकेशन सेटिंग ऑफ नेशनल स्कूल लाइक बेंगल नेशनल कॉलेज टू बॉयकॉट स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन स्टेट माने सेठी के थिला ब्रिटिश स्टेट कंट्रोल करथिले इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस दैट इज आत्मशक्ति लॉन्च ऑफ इंडिजिनस एंटरप्राइज लाइक पीसी रेस बेंगल केमिकल्स एंड इंडिजिनस बैंक्स स्टोर्स सब से नुआ नुआ स्टार्ट होता कि निज माने आत्म जमी आम चलती आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस से भी सेटा निज उपरे निजे निर्भर करिया स्टार्ट करथिले कल्चरल रिनेसा दैट इज कंपोजिशन ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग लाइक रविंद्रनाथ टैगोर आमर सोनार बांग्ला राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड समिति से बहुत सारा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट है बहुत सारा समिति स्टार्ट है ये जमी एग्जांपल दिया डोमिनेंस ऑफ लीडर्स लाइक तिलक पाल एंड अरविंद घोष मोबिलाइजेशन भाया लोकल कॉर्प्स लाइक समिति अश्विनी कुमार दत्त एंड स्वदेश बांधव समिति ठीक अनुशीलन समिति भी थिला देन क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट कौन पॉजिटिव पड़ला कौन तार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ला और लिमिटेशन हम देखा फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है शिफ्ट टू रेडिकल पॉलिटिक्स शिफ्टेड द फ्रीडम्स गोल फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म टू फुल इंडिपेंडेंस और स्वराज जो मैंने एक्सट्रीमिस्ट आसवा मॉडरेट थे से प्रे करते पिटिशन करते से मैंने कौन कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करिया बट एबे कौन है एबे सेटा शिफ्ट होगला टू स्वराज फुल इंडिपेंडेंस mass participation brought women student and urban middle classes directly into political struggle for the first time self reliance and foundation laid the economic and cultural blueprint for Gandhian movement ठीक अच्छे लिमिटेशन कौन थिला communal drift to mobilize the Muslim peasantry due to Hindi religious imagery which British divide and rule tactics exploited हिंदू मुस्लिम भितर जो माने मुस्लिम पिजेंट्री माने जो थे आने टे कष्ट होता तो एंड वी नो ब्रिटिश कैरेट स्टिक पॉलिसी हो डिवाइड रूल टैक्टिक्स हो ये सब से सांगे सांगे स्टार्ट करते सूरत स्प्लिट 1907 द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दैट लीड टू द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस देन सीवियर रिप्रेशन ब्रिटिश क्रैकडाउन एंड पुलिस टेरर लेड टू मूवमेंट डिक्लाइन बाय 1908 ऑब्वियसली तापर लॉर्ड कर्जन फिर 1911 पाखापाखि फिर जोटा डिवाइड करते फिर मर्ज करके गोटे ही स्टेट कले द स्वदेशी मूवमेंट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम एलिट पॉलिटिक्स टू मास नेशनलिज्म एलिट पॉलिटिक्स कौन कौन जो मैंने मॉडरेट्स थे से लगुला कि मास मान पाखे किसी पावर ना तो मास मानक आम मिसेबानी आम जी भी मिडिल क्लास पढ़ा लिखा अच्छु आम आम भर से रिफॉर्म वगैरह आम ट्राए कर नॉट मिडिल क्लास से तो एलिट ही थे से सर्विंग एज एन फाउंडेशन टेस्टिंग ग्राउंड फॉर इंडियाज अल्टीमेट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ठीक अच्छे ये मुझे गोटे इमेज कर सो यू कैन यूज दैट इमेज एज वेल यहाँ दुटा थी आमर हिस्ट्री आउ भी गोटे हिस्ट्री क्वेश्चन थी लेट्स डू इट फास्ट चेन्नई मैंगलोर नहीं बोधे सेक्शन बी रे थी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन just 1 minute climate change OPSC प्रति वर्ष पचारुची वन वे और अदर प्रति वर्ष से पचार चलते दिस इज फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एंड ओडिशा वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड ऑब्वियसली एटा कोट आछि एटा मॉडर्न इंडिया तो नुह तो जेतले आमे
मॉडर्न इंडिया छाड़ुचंदी 1857 परठू जति पढ़ुचंदी दैट इज मॉडर्न इंडिया ता आगु जो आसीबो मेंस रे सेउटा सब कोन आसीबो कल्चर और हेरिटेज कल्चर एंड हेरिटेज आमे ओडिसा सेक्शन में भी कल्चर हेरिटेज देखिथिले नाउ दिस इज कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया तो एटा को भी तुम छाड़ी जीवन गोटे 15 मार्क क्वेश्चन तुम जब छाड़ी जाऊच ताले मानिक चले कि 15 मार्क क्वेश्चन तुम गोटे कला फाइन सो कौन पचार बहुत इजी क्वेश्चन अच्छी अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड को आम ऑलरेडी गोल्डन पीरियड भी कहते और गोल्डन एज भी कहते कहीं बिकज से टाइम रे गुप्ता एज माने जो डायनास्टी थिला दैट इज स्टेबल जेहेतु स्टेबल थिला हेटी पीस भी थिला प्रॉस्पेरिटी होतला से टाइम रे तो जेहेतु पीस प्रॉस्पेरिटी थिला लोक मैंने बहुत नुआ नुआ जिन इनवेंशन कले से टाइम रे बहुत किसी पोएट्री वगैरह लिखा है सो फॉर द माने इवन एस्ट्रोनॉमी वगैरह आम आग को बढ़िले वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी मन रखियो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी कथा हम कहना एस्ट्रोलॉजी जो नाला भी इंडिया फाइन तो जेहेतु एत सब जिन आम प्रोग्रेस कले एस्ट्रोनॉमी हो जाऊ मैथमेटिक्स हो जाऊ लिटरेचर हो जाऊ सो फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज गोल्डन एज तो गुप्ता एम्पायर the time period is 320 to 550 CE is widely regarded as golden age of ancient India characterized by profound advancement in mathematics astronomy metallurgy medicine and technology तो आम गोटे गोटे डिस्कसन करवा इन मैथमेटिक्स सेक्टर रे ये मुझे अलरेडी गोटे फिगर कर फिगर सब मुझे लिखिदे मैथमेटिक्स आम कौन कौन करते डेसिमल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन एंड ब्रह्मगुप्त रूल decimal system and concept of zero आम जानते the concept of zero was invented by India the invention and standardization of place value decimal system and formal mathematical use of zero or शून्य transformed the global numerical system तांको केते जणा थिला 1 2 up to 9 9 पर कोन होबो फाइन सेटा तांको माने जीरो वाज नॉट इन यूज इंडिया रु जीरो रो आविष्कार हेतिला आर्यभट्ट कंट्रीब्यूशन कौन आर्यभट्ट कंपोज द लैंडमार्क ट्रिटिस आर्यभट्टिया एस्टाब्लिशिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री साइन टेबल्स कैलकुलेटिंग पाई टू 4 प्लेसेस माने पाई रो जो चारटा वैल्यू अछि 3.1416 एति पर्यंत से कैलकुलेट कले पाई तुम जे चाहिबो एबे 100 पर्यंत कैलकुलेट भी तुम कर परिबो बट सेतबेले चारटा प्लेस पर्यंत कैलकुलेट करिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ठीक अछि तापर कौन है ब्रह्मगुप्त रूल और ब्रह्मगुप्त कंट्रीब्यूशन कौन थिला ब्रह्मगुप्त लेटर फॉर्मुलेटेड ऑपरेशन रूल फॉर जीरो नेगेटिव नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन केमिति आम जीरो को यूज करवा नेगेटिव नंबर्स को केमिति आम यूज करवा एंड हाउ टू यूज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन हिज वर्क कौन तांकर कामर ना थिला ब्रह्म ओके ब्रह्मस्फुत सिद्धांत ब्रह्मस्फुत सिद्धांत ठीक मन रखा पड़ो बिकज वी नीड टू राइट इट एस्ट्रोनॉमी कंट्रीब्यूशन कौन हेलियोसेंट्रिक एंड एक्सियल रोटेशन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्स एंड बराह मिरर्स कंपाइलेशन फर्स्ट देखो हेलियोसेंट्रिक एंड एक्सियल रोटेशन आर्यभट्ट करेक्टली प्रोपाउंडेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल रोटेट्स ऑन इट ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड सन आगुरी कौन थिला लोक मानुଥିଲେ कि पृथ्वी सेंटर अच्छी चारिपटे सूर्य आ बाकी सब ग्रह बुलचंती तो हेलियोसेंट्रिक और एक्सियल रोटेशन कांसेप्ट वाज गिवन बाय आर्यभट्ट तो आगुरी आम कहीपर अलग देश थिला बट इंडिया रे आर्यभट्टर कंट्रीब्यूशन इज आर्यभट्ट ए जिनसटा माने कहीपर कंट्रीब्यूशन बोली इंडिया रे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्स ही रिजेक्टेड माइथिकल explanation of solar and lunar eclipse proving they are caused by shadow cast by earth and moon आम जानी केमिति एक्लिप्स होउची एट रहला तमरो अर्थ एट रहला तमरो सन जेतेबेले सूर्यंकर किरण पड़िबो अर्थ उपरे अर्थ शैडो पड़िबो मून उपरे ठीक मून तो मून उपरे तो मून कोन हो गोटे पार्ट तार अंधार हो जिवो ठीक अछि कि जदि एठी रहला मून टा रहला ताले मून जेतले लाइट पड़ियो मून रो किछि लाइट माने मून किछि लाइट ब्लॉक करियो ना सेतले किछि समय पे सूर्य डूबी जिवे आ सेतले हमको स्टोरी सुनुतले राहु केतु वाला स्टोरी तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्लिप्स से तो केबेटू देलेनी बट स्टिल आमे माने मोर मन अछि इवन इन आवर स्कूल डेज वी यूज्ड टू लिसन दिस स्टोरी ऑफ राहु केतु सूर्य को खाई गले चंद्र को गिली देले
Barahamir's compilation. Barahamiro authored Pancha Siddhantika, compiling 5 prominent astronomical schools, and Brihat Samhita, covering planetary movement, କେମିତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମେଟେରିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ରେନଫଲ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଠିକ୍। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ଥାର୍ଡ ହେଲା ମେଟାଲୋଜି ଆଣ୍ଡ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। କ'ଣ ଥିଲା? ଆଡଭାନ୍ସଡ ଆଇରନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କପର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ କାଷ୍ଟିଂ, alchemy and dyeing. Advanced iron technology, the Mehroli iron pillar in Delhi. Mehroli जो दिल्ली रे ओके गोटे आयरन पिलर अच्छी एपर्यंत व्हिच इज माने एबे पर्यंत सेटा भी तादरे कोन होनी तादरे रस्ट लागुनी। द मेहरोनी आयरन पिलर इन दिल्ली स्टैंड्स एज ए मास्टरपीस ऑफ रस्ट रेजिस्टेंट मेटलर्जी रिमेनिंग corrosion free despite centuries of atmospheric exposure। ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ଖାଉଛି। ବୋଧେ ସେଟା କୁତୁବ ମିନାର ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ରଖା ହେଇଛି। ଯେତିକି ମୋର ମନେ ପଡୁଛି 2-3 years ବ୍ୟାକ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସୋ ବର୍ଷା ଖରା ସବୁ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଏକ୍ସପୋଜ ହେଲା ପରେ ବି ତା ଦେହରେ ରଷ୍ଟ ଲାଗୁନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ advanced technology of that time। Copper and bronze casting, artisans mastered metal casting techniques, creating large metallic statues such as 7 to 7.5 feet ସୁଲତାଜଗଞ୍ଜ କପର ବୁଦ୍ଧା। ବୁଦ୍ଧାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି 7.5 feet ହାଇଟ୍ର। Alchemy and dyeing, significant progress occurred in chemical process including the preparation of metallic compound, pigments, dye, industrial distillation। dye ମାନେ ଏଠି କଲର କଥା କୁହାଯାଉଛି। Fine। And the last one is medical। ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଟରେଚର ବି ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ କ'ଣ ଅଛି ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ର କଥା ଅଛି ତ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ କରି ଲେଖିଛୁ ଏଠି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଲିଟରେଚର ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବ। मेडिसिन एंड सर्जरी कौन है? आयुर्वेदिक टेक्स्ट, वेटरनरी साइंस, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। फाइन। आयुर्वेदिक टेक्स्ट कौन थिला? द पीरियड सॉ मेजर कंपाइलेशन इंक्लूडिंग भागवतस, अष्टांग हृदय एंड अष्टांग समग्रह, consolidating core medical concept। Veterinary sciences specialized discipline emerged such as हस्त हस्त्यरु वेद and polacopia, dealing with elephant disease। Pharmaceutical development increased reliance on herbal medicine, mineral preparation like rasashastra, and refined surgical method including सुश्रुतरस। जो आमर थिले ना सुश्रुत तांकर ट्रेडिशन। साइंटिफिक अचीवमेंट ड्यूरिंग ओके ओके सॉरी से पर्टिकुलरली पचारची मुझे पर्टिकुलरली दे आर आस्किंग अबाउट द मैथमेटिक्स। जेहेतु मैथमेटिक्स ऊपर पचारची और साइंस ऊपर पचारची, साइंस ऊपर पचारची माने हम लिटरेचर केमती लिखबा एठी। तो मैथमेटिक्स लिखले हमें, मेटलर्जी लिखले, एस्ट्रोनॉमी लिखले आउ मेडिकल एंड सर्जरी। फाइन। Scientific achievement during Gupta era established foundational benchmark that deeply influenced Islamic and European scientific renaissance through cross-cultural trade and translation। Fine। So this is all एतिकी थिला history रो। So we will discuss or we will end our discussion here। Next class रे आमे geography रो start करिवा। Fine। देखिए आम जोग्राफी कौन क्वेश्चन अच्छी। विल स्टार्ट फ्रॉम जोग्राफी। दिस 2 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। जेनेरेटिव सिटी एटा तो सोशल सोसाइटी आसबो, एटा हम पछर जिबा। हमें नेक्स्ट स्टार्ट करिवा। ओके एटा हम स्टार्ट करिवा। फाइन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।